Good morning, dear children. I have an interesting story to tell you today. Check this picture. In this picture, you can see a web, spider, something dark in the background, and a person. So, the story revolves around all these four things. Let's start. Topic of the story is Try, Try, Try Again. Chapter 2, page number 18. Once upon a time, there lived a king in Scotland whose name was Robert Bruce. He was very brave and wise. Now the story is about a king. His name was Robert Bruce, and he was a king of Scotland, and he was very brave and wise. रॉबर्ट ब्रूस के बारे में हमें बताया जा रहा है कि वो कैसा था? ब्रेव. ब्रेव माने होता है बच्चों जिसे किसी का डर ना हो, बहादुर जिसे हम कहते हैं हिंदी में. ब्रेव विदाउट फेयर, निडर. वाइज होता है बुद्धिमान. अब जैसे there are so many countries in this world. India is one of them and Scotland is one of them. So we are talking about Scotland. This story is related to the history of Scotland बेटा. जैसे हमारे इंडिया से रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ हैं हमारे इतिहास की. महात्मा गांधी, राजा हरिश्चंद्र, वैसे ही वहाँ के एक राजा थे, ये उनकी कहानी है स्कॉटलैंड की. The King of England wanted to make Scotland a part of England, so he led a large army into Scotland. Now, Scotland was under English. The King of England, the people of England were called English. अब किंग ऑफ इंग्लैंड जो थे वो चाहते थे कि स्कॉटलैंड जो था वो इंग्लैंड में मिल जाए. ही वांटेड टू मर्ज स्कॉटलैंड इनटू इंग्लैंड. सो व्हाट ही डिड, ही लेड अ लार्ज आर्मी इनटू स्कॉटलैंड. उन्होंने क्या किया था स्कॉटलैंड में? अपना आर्मी जो थी उनका उसको वो संभालते थे. एंड ही वॉज लीडर देयर इन स्कॉटलैंड. हु? जो इंग्लैंड के राजा थे. बिकॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड ही वांटेड टू मर्ज स्कॉटलैंड इनटू इंग्लैंड कंप्लीटली. नाउ वी आर कॉल्ड इंडियंस बच्चों. हम इंडिया में रहते हैं, हमें इंडियन कहते हैं. द पीपल ऑफ स्कॉटलैंड आर कॉल्ड स्कॉटिश एंड द पीपल ऑफ इंग्लैंड आर कॉल्ड इंग्लिश. नाउ though the Scottish army was small, King Bruce bravely fought the English 6 times, but he was defeated each time. Finally, he had to run away to a forest to save his life, where he hid himself in a cave. Now what happened? मैंने आपको बताया कि स्कॉटलैंड के जो लोग हैं उनको कहेंगे हम स्कॉटिश. अब स्कॉटिश आर्मी जो थी बच्चों वो छोटी थी. तो what King Bruce did, he fought bravely 6 times. He fought with English, but he was defeated each time. लेकिन हर बार वो हार जाते थे क्योंकि जो इंग्लिश आर्मी थी that was big and well equipped. Now डिफीट का मतलब होता है हारना बच्चे. डिफीटेड लॉस द वॉर. जब हम कोई चीज़ हार जाते हैं उसको कहते हैं डिफीट. ही डिफीटेड ईच टाइम. फाइनली ही हैड टू रन अवे टू अ फॉरेस्ट टू सेव हिज लाइफ. अब अपनी जान बचाने के लिए ही हैड टू रन फ्रॉम द बैटल फील्ड एंड ही हिड हिमसेल्फ इन अ केव. अब देखिए यहाँ पे दिस हिड, हमें हाइड पता है, हाइड एंड सीक. हाइड बने छुपना और हिड बने छुपा था. ठीक है. तो नाउ वी गॉट टू नो दैट दिस ब्लैक डार्क बैकग्राउंड इज अ cave where King Bruce is sitting. He has taken shelter in this black dark cave. दो चीजें हमें समझ में आई. Now, King Bruce was tired and sick of fighting. He had given up all hope and thought there is no use trying anymore. Now, when he was sitting there, he was relaxing and he was tired. He was exhausted. What he thought? उनको लगा कि अब दूसरा I don't have that much power to fight again. I won't be able to fight again. तो he given up all his hope. देखो बेटा, गिव अप करना होता है जब हम सारे हथियार डाल देते हैं, जब हम अपना मन को ऐसा बना लेते हैं कि अब हम इससे आगे नहीं कर सकते, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते. और when we stop trying to do, when we stop trying, you can say कि जब आप कोशिश भी नहीं करना चाहते हैं, that is called giving up. Like I have given up now. I will not make food for you because you don't eat at all. Okay? इस तरह से अगर एक मम्मा परेशान हो जाती है आप खाना नहीं खाते तो she can say I'm tired, I have given up. होप होता है बच्चों, होप होता है जब हमारे अंदर ये उम्मीद जिसे हम हिंदी में कहते हैं, होप होता है अ फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग गुड टू हैपन. होप एक पॉजिटिव चीज़ है
जो आपके अंदर एक ताकत लाती है। जब आपके अंदर होप होती है तो आप अपने करेज को गैदर करके काम करते हैं। आई एम होपफुल दैट आई सिक्योर फर्स्ट पोजिशन इन माई क्लास। आई एम वेरी होपफुल। ठीक है, आई हैव दैट होप। वी आर होपफुल दैट दिस COVID-19 विल लीव द कंट्री सून। तो ये है आपका होप। तो वो अपनी होप छोड़ चुके थे क्योंकि वो 6 टाइम वो हार चुके थे, तो ही वाज एग्जॉस्टेड। अब क्या हुआ देखो बच्चों, नाउ व्हाट हैपेंड, दैट इज इंटरेस्टिंग। As he lay thinking, he saw a spider. It was trying to reach the roof of the cave. It failed again and again, but each time it fell, it would try again. It did not give up. At last, it reached the roof of the cave. Now, what happened? Now, the power of the spider comes. He saw a spider. He saw a spider, and the spider was hanging with a thin thread. It was about to reach its web when it fell to the ground. ये ट्राई कर रहा था ऊपर जाने की और ये वेब अपना बना रहा था केव के टॉप में, रूफ में. Spider tried again and again to climb up to the top, and he was spinning the web, and every time it failed, but Spider did not give up and reached at the top of the cave. अब क्या हुआ बच्चों, बार बार वो कोशिश कर रहा था स्पाइडर, लेकिन गिर जाता था, but the spider did not give up. At last it reached the roof of the cave. लेकिन फाइनली वो ऊपर चढ़ के केव बनाने में नहीं, अपना वेब बनाने में सक्सेसफुल हुआ. King Bruce was surprised. He cried, "Wow, this is an exclamatory mark. If a little spider doesn't give up, I too can try. I'll fight the war again and I'll win." He got inspired to see that spider. What he thought, King Bruce thought that, wow, it is so surprising that a tiny spider has tried again and again and again, and he got success. So why can't I? मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकता हूँ? I will also try and I'll fight the war again and I will win. उनका जो होप था वो दोबारा से उनके अंदर आया. And it was just because of that little spider. Now he came out of the cave, he gathered his army and marched to the battlefield. This time he fought with a new courage and won. A little spider had taught him a lesson. Try again. You will surely win. Now what happened बच्चों? वो अपने केव से बाहर आए क्योंकि उसको देख के वो इंस्पायर हो गए थे. ही गैदर्ड ऑल हिज करेज, ही गैदर्ड हिज आर्मी. गैदर होता है इकट्ठा करना. ही गैदर्ड हिज आर्मी एंड मार्च टू द बैटलफील्ड. और बैटलफील्ड जहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं बच्चों. मार्च माने आगे बढ़ना. सारी की सारी फौज एक सोल्जर की तरह जब आगे बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड मार्चिंग. Coming together into a group is called gathering. March होता है बेटा when somebody walks like a soldier. Battlefield होता है where battle is fought. Now this time he was full of energy and he fought with a new courage. Though he 6 times he tried but he failed, but this time he tried with a new courage and won. A little spider had taught him a lesson. Try again. You will surely win. Where he got the inspiration from? He got the inspiration from the little spider. और स्पाइडर की वजह से उनके मन में जो होप आई, जो करेज आया, उसकी वजह से he won the battle. और इस तरह से जो किंग ब्रूस थे वो बैटल जीत गए. Now this is the story. Now बच्चों, you should never lose hope. The lesson we learned from the story is you should never lose hope. You should always try and you will win. Surely you will win if you keep trying. Thank you so much for the story, bachcho. Thank you so much.